Hey guys, hi to all. This is the video in which you are getting the question answer of textbook chapter Poets and Pancakes. Question number 1 is the author has used gentle humor to point out human foibles, pick out instances of this to show how this serves to make the piece interesting. So there are different instances which we read when we read the chapter Poets and Pancakes. So the instances of humor used by author make or mark the eccentricities and idiosyncrasies without making any direct and rude comment on anybody. For instance, the author portrays the makeup artistess and the usage of pancake in an interesting way. Even the caricature of Subu is hilarious. The way he tries to help his principal or boss by offering quick solutions to his problems is quite amusing. The episode of Legal Advisor that inadvertently causes the end of an actress' career is yet another example. The frustration of the office boy, the superficial praising of Gandhi, hatred of communism, and the mystery surrounding Stephen Spender are some of the instances where the author has incorporated gentle humor. So इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो सब सिचुएशंस यहाँ पे अशोका मित्रन ने सब चीज़ों को जो ऑकवर्ड हुई हैं हैपेंड इन चैप्टर में उनके बारे में उसने बात की है। जैसे ऑथर का ये बताना कि मेकअप आर्टिस्ट जो थे वो लॉर्ड्स ऑफ मेकअप या क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेकअप मंगवाते थे और आर्टिस्ट जो थे उनको तैयार ऐसे किया जाता था जैसे मॉन्स्टर को तैयार किया जाता था। सुब्बू का जो कैरेक्टर है वो भी हिलेरियस है क्योंकि जिस तरीके से वो हेल्प करता था अपने बॉस की, उसके पास हर चीज़ का सल्यूशन होता था। एक्टर एक्ट्रेसेस अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको सुब्बू हेल्प करता था कि कैसे वो परफॉर्म करेंगे। इवन दो ही वॉज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड बट येस ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली। सो जो एपिसोड था लीगल एडवाइज़र का, वो जैसे उसने क्या किया, एक एक्ट्रेस का करियर ही जो है वो ख़राब कर दिया। फिर उनको लीगल एडवाइज़र होने के बजाय इलीगल एडवाइज़र बोला जाने लगा। ऑथर का अपना क्यूबिकल में बैठना, अपने ऑफिस में बैठना, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को कट करना और उनको फाइल में स्टोर करना, सबको ये लगना कि उनका काम जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंस्टेंस विच यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली दीज इंस्टेंसेस विच आर रिटन इन दिस आंसर। ऑफिस बॉय का फ्रस्ट्रेशन में आना बिकॉज वो यहाँ पे कुछ बनने के लिए आया था और उसको यहाँ पे कुछ भी ना बनाते हुए एक मेकअप मैन बना दिया गया, वो भी क्राउड मेकअप के लिए। सो दीज ऑल थिंग्स वी कैन से दे वर mystery, they were like mystery, and that's the reason Asoka Mitran has used these instances to make this piece interesting, to make this story interesting by using gentle humor. Now this question is again there, but this is not that much important, so we are leaving it. So it is also not that much important, we are leaving this question also. This is also not good. Now here we are on the second question of the text. Why was Kothamangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studio? So we got many instances which are proving that Kothamangalam Subbu was a person who was multi-talented. So यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि Subbu succeeded in securing the place closest to the boss by means of flattery. He was not brilliant but a rather cheerful person and exceedingly loyal to the boss. He offered solution whenever the boss was in a fix. Fix means problem. Thus the other employees considered him number 2 in Gemini Studio.
Now question number 3 is, how does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studio? Answer of this question is, the audience at the Gemini Studios was not knowledgeable enough to understand the thrills and travails of an English poet, of which the visitor poet editor talked about in his speech. The studio made films for simple people whose limited resources did not provide them with an opportunity to develop a taste in English poetry. The audience failed to understand anything the poet said, all the more because of the letter's accent, means Stephen Spender's accent. The poet editor in turn looked baffled. Baffled means confused, realizing the utter inappropriateness of his speech being directed to such an audience. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ऑडियंस थी जिमिनी स्टूडियो की वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं थी, वो ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले लोग भी नहीं थे जो थ्रिल्स और ट्रेवल्स जो हैं वो इंग्लिश पोइट के समझ पाते। तो यहाँ पे जब उनकी स्पीच शुरू होती है उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि लोगों को जो वो बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, और लोगों को ये लगता है कि बिकॉज़ उनका एक्सेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है, वो उनके एक्सेंट को कैच नहीं कर पाते, इसलिए दोनों ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कौन, ऑडियंस एंड स्टेफन स्पेंडर। इसलिए वो बाद में ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने बॉस के आगे कि आगे से ऐसी परमिशंस जो हैं उनको ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हमारे जो बोर्डम है या फिर उन चीज़ों को ये लोग क्लियर ही नहीं कर पाते हैं और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दो द ऑथर हैड अ वेरी tedious and unchallenging job at the studios, his interest in literature and writing is apparent in his willingness to participate in the short story contest organized by the British periodical The Encounter. Moreover, the author appears to be a keen reader, visiting libraries and buying books on wide-ranging topics whenever he could afford them. Besides, the narrative also establishes the fact that the author was one of the most knowledgeable persons in Gemini Studios. His idea about how prose writing was not meant for geniuses but for those with patience and perseverance highlight his reflective and deep thoughts on literature and creative writing. So यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जो ऑथर की जॉब थी वो बड़ी ज़्यादा टेडियस थी स्टूडियो में, क्योंकि उसकी जॉब थी उसने न्यूज़पेपर को पढ़ना और पढ़ के उसके बीच में से कटिंग्स को निकालना, ये सब चीज़ें जो है उनको करनी पड़ती थी, और उन कटिंग्स को, क्लिपिंग्स को वो फाइल में स्टोर किया करते थे, जबकि सबको ये लगता था कि उनकी जॉब ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बट येस उनकी जॉब बहुत ज़्यादा टेडियस थी और चैलेंजिंग थी। और हमें ये भी पता चलता है कि उनका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड एजुकेशन और टुवर्ड लिटरेचर की तरफ वो अच्छा था, बिकॉज़ जैसे उन्होंने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, स्टोरी कंटेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइज हुआ था, उसको बीच में उन्होंने पार्टिसिपेंट बनना था, वो लाइब्रेरी विज़िट करते थे, बुक्स को भी लेते थे जब उनको लगता था कि उनके पास टाइम है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबली हमें ये बताती हैं कि वो नॉलेजेबल पर्सन थे, इस स्टूडियो के मेंबर होने के नाते वो जीनियस भी थे, और वो बहुत सारे ऐसे काम किया करते थे, और उनके बीच में पेशेंस और परसिवरेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें जो है हमें ऑथर के बारे में बहुत कुछ बताती हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, जीनियस थे, उनके थॉट रिफ्लेक्टिव थे, और उनके थॉट जो है वो लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ इंक्लाइंड थे। थैंक यू, विद दिस होप दैट you are really achieving what you want to get from this channel. Thank you so much. Subscribe it for more such videos.